Online classes of Shivaji Group of Institution. Student, myself, Jitendra Tripathi. Today I am going to explain remaining part of the chapter Atomic Structure. Student, in previous class I am going to explain Bohr's atomic model and demerits of the Bohr's atomic model. In demerits Bohr's atomic model, first one is the atomic model. Bohr's atomic model cannot explain the spectrum theory of multi-electron containing atom and ion. It only explains one electron containing atom and ion, like sodium plus lithium plus only such type of atom, hydrogen plus, like this one. These spectrum can be explained with the help of Bohr's atomic model, but multi-electron containing, like Mg double plus, Al triple plus, and so many. The spectrum of these atom and ion cannot explain with the help of Bohr's atomic model. This is the first demerit of the Bohr's atomic model. And second one is the Bohr's atomic model cannot explain the phenomena of Zeeman effect and Stark effect. Zeeman effect and Stark effect. Zeeman effect. What is the Zeeman effect? Zeeman effect is that splitting of spectrum line in magnetic field. And Stark effect is the splitting of spectrum line in electric field. These two phenomena, why these spectrum line is split up in magnetic field and why these spectrum line is split up into electric field. These two phenomena known as Zeeman effect and Stark effect respectively. So these two phenomena cannot explain the Bohr's atomic model. That's why Bohr's atomic model failure. After that, Sommerfeld atomic model. What is Sommerfeld atomic model? See here. Sommerfeld atomic model. Sommerfeld atomic model. The last atomic model. After that, one atomic model also given in higher class. In Sommerfeld atomic model, having some postulate that is common in previous, like that is, first one is the atom is the smallest particle of an atom. Second one is the it contains electron, proton and neutron, and nucleus contains neutron, proton, and electron. Third one is the important point. Electron revolve in
This is the last rule, last postulate of the solar field. Circular like this, and elliptical like this. Okay. In circular, only one type of axis, that is known as diameter. While in elliptical orbit, two type of axis. This one is the circular, and this one is the elliptical orbit. Okay. Here diameter are same, but here diameter are different. Larger diameter is known as major axis, and smaller is the known as minor axis. Okay. For electron revolving circular orbit, angular momentum that is MRV. In previous class I explained to you what is the MRV, angular momentum, mass of the particle, R is the radius of that orbit, and V is the tangential velocity at which the electron revolve in the new cells. So this one is the angular momentum, MRV. It is given by the NH upon 2 pi. Okay. For revolution partition in elliptical orbit, angular momentum MRV is given by KH upon 2 pi, where n equal to principal quantum Newton, that is quantum. This topic explaining for the class, and K is the azimuthal quantum number. These circular and elliptical orbit penetrate each other in such a manner. This is one circular orbit and elliptical orbit. These orbits are penetrate to each other. That's why electron jumps into lower to higher and higher to lower. Okay. This is an idea about the solar field atomic model. After that, is atomic number. Atomic number.
weight. Okay, it is represented by A. So A is given by number of proton plus number of neutron. But in some cases, number of proton is equal to number of electron. We can also write the formula number of proton and number of electron. This is for only for neutral atom. Number of neutron or number of proton, number of electron is also known as atomic number. So on this place you can write Z plus number of neutron. In some questions, number of neutron, problem for number of neutron is given by A minus Z. This is the formula of number of neutron is given by A minus Z. Just take an example, element X, whose atomic number is Z and atomic mass is A. This is the representation of an element where in subscript given Z is the atomic number and superscript A is known as atomic weight. In this form, elements are represented. Okay? Now, some other important definition. See here. First one is the isotopes. Second one, isobars. And third one is the isotone. Okay? What is isotopes? Element having same atomic number but different atomic mass. Same atomic number and different atomic weight are known as isotope. Take some example. Hydrogen is 1H1, 1H2, 1H3. There are three isotopes of hydrogen. One is 1H1, 1H2, 1H3, protium, deuterium and tritium. Now, next one is the carbon. 6C12, 6C13, 6C14. Nitrogen 7N14 and 7N15. Similarly, oxygen A O16, A O17, A O18. Chlorine 17Cl35, 17Cl37. Do you know the uranium? 92 uranium 235 and 92 uranium 238. These are the isotopes of some. In periodic table, most of the elements represent the isotopes. Now, isobars. What is isobars? Same atomic weight and different atomic
number are known as isobar. Take some example. 19 potassium, 40 approx 20 calcium 40 is also. These two elements having different atomic number but having same atomic weight. First one. Second one is the here one are also 18 are also included, but these two are sufficient. 28 nickel 64 and 30 Zn 64. These are also known as isobars. Now third one is the, these are limited. Third one is the isotope. Elements having same number of neutron. Take some example. That is 1H3 and 2He4. How will you calculate the neutron in these two? Atomic weight minus atomic number. So in tritium 3 minus 1 is 2. Now helium 4 minus 2 is also 2. Both having 2 neutrons. Okay. And second one is the see here. These two. 6C13. 13 minus 6 is 7 and 7 and 14. 14 minus 7 is also 7. So this one is a isotope, isobar and isotope. Some other type of isotope also exist, which I explained in this class. This one is the isomer, isocristial, isoelectronic, isomorph, and isodiaphers. These are also related to the isotopes, isobar, isotope, isomer, isosphere, isoelectronic, isomorph, and isodiaphers. So this is all about today. Thank you for attending the class. Okay, over and out. Students, in our today's video lecture, we would discuss the combination of error and we would finally finalize this particular topic of the chapter error. And in our previous video lecture, we have discussed two cases for addition and subtraction. And what we have found if there is a physical quantity Z which is equal to A plus B, which is equal to A plus B, it means the physical quantity Z is the sum of two physical quantities A and B. And if the absolute error in Z is delta Z, in A is delta A, in B is delta B. So what is the relation between delta Z, delta A and delta B where Z equal to A plus B? So we have derived this relation and we have found delta Z equal to delta A plus delta B. It means when we talk about addition and subtraction, the mean absolute error of the resulting physical quantity is the sum of mean absolute error of the individual physical quantity being added. It means relation is relation was in the terms of mean absolute error. It is a similar result when we discussed Z equal to A minus B means subtraction case. Now in today's video lecture, we would start Z equal to AB multiplication case and subtraction case. So if Z equal to AB
Resulting mean absolute error in Z is delta Z, in A is delta A, and B is delta B. So let's put here Z plus minus Z. This is the representing matter in terms of mean absolute error. I had already discussed this. For A plus minus delta A, and for B plus minus delta B. So this relation can be represented like this. This is in terms of mean absolute error. Now let's start to solve AB. A delta B plus minus delta A, B plus minus, so it will be plus minus. You would not confuse here, plus minus, so minus would be also there, okay, plus minus delta A, delta B, okay. Now Z plus minus delta Z. Students, you are seeing here, and we have already discussed a numerical in the previous video lecture, where we have found the mean absolute error, and you have seen there the value of mean absolute error was very less. So this quantity delta A is very less. It is very less, less than 1. It is less than 1, very less. Delta B is also very less quantity, and the multiplication of both would be also very less, because we know that 0.1 into 0.2, 0.02. So this quantity is very less compared to these two. So when we multiply two such quantities which are lesser, very lesser than 1, then the resulting quantity would also very less. So that's why we can neglect this particular quantity. We can neglect this particular quantity, because addition of this quantity into this quantity would not make any difference. So we are neglecting that smaller quantity, and what we have left, AB, here we can take a common, so it would become A delta B plus, इसको हम लोग क्या करेंगे, B आगे रखेंगे, B delta A, and it is Z plus minus delta Z. ओके, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग रिलेट कर लेते हैं. तो यहाँ से Z क्या AB है, तो हमारा डेल्टा Z क्या जाएगा, डेल्टा Z हमारा आएगा A डेल्टा B प्लस, यहाँ से देखेंगे, प्लस B डेल्टा A. कंपेयर किया, Z की जगह पर लिया तो डेल्टा Z आपका इसके इक्वल हो जाएगा. अब यहाँ पर this is mean absolute error in Z, this is mean absolute, but what is this? So this result is not making any sense here. So for particular modification, we would divide both the LHS and RHS by Z. So it is delta Z upon Z, and now you are seeing that this is the relative absolute error, this is the relative mean absolute error. Here it would become some useful relation, A delta B upon Z plus B delta A upon Z. And now you can put Z equal to AB here. So what would we get? Delta Z upon Z equal to A delta B upon AB. A to A cancel, plus B delta A upon AB, B to B cancel. Finally delta Z upon Z equal to delta B upon B plus delta E upon A. Now this result is meaningful. This doesn't make any sense. Here you are seeing that delta Z upon Z, it is the relative error. 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 It means when we talk about multiplication of two physical quantities, the resulting error in Z is in terms of relative error. It is not in terms of mean absolute error. So you are seeing here, sorry, the relative mean absolute error in resulting physical quantity is equal to the sum of relative errors in the individual quantity being
So this is the important result you are seeing here. Okay, so this is in terms of relative error. You have just keep in mind that when we talk about multiplication, it is in terms of relative error. Now we are going to discuss division. Z equal to A by B. Okay, let's put it with the error Z plus minus delta Z equal to A. You can take this term in the numerator. So A plus minus delta, this is for A, and B is here A B to the power minus 1. B to the power minus 1. And for B, we can put B plus minus delta B to the power minus 1. Okay? Now, we have to solve this. Here you can take B common. Here you can take B common. But keep in mind this B, you cannot take common because this B is with this operator delta. So, when there is any quantity with the function or operator, you can take that quantity common. So, here B is not present. Okay, here extra B is not present. So, we have to multiply and divide by B. So, when we take B common, जैसे ही B बाहर आएगा पावर क्या लगेगी -1. तो बाहर अगर B की पावर जाएगी -1, ये बचेगा आपका 1 प्लस यहाँ B था नहीं, तो हमने एक B से मल्टी किया एक B से, तो ये B बाहर आ गया और ये B आपका बच गया और पावर क्या हो गया आपकी -1. I think this line you have to clear respectively. So here यहाँ पर आपको मैथ के रिस्पेक्ट में पॉइंट क्लियर है कि B आपने कॉमन लिया, यहाँ B नहीं था तो हमने B से मल्टी कर दिया, B से क्या कर दिया डिवाइड, ये B कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा पर प्लस माइनस ये भी निकल गया डेल्टा के अपॉन B, और जब ये बाहर आया पावर लगी जो भी पावर थी -1. ठीक है, D की पावर -1, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप कॉमन यहाँ से काम करिए, A कॉमन ले लेना, A 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन, और ये B माइनस हो गया, ये आपका अपॉन B हो गया, ये हो गया आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B टू द पावर -1. ठीक, ये टर्म कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल में 1 प्लस x पावर n, 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन होता है बाइनोमियल 1 प्लस nx प्लस n n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर n so on n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3x. ठीक, ये आपका जो है ये बाइनोमियल में आपका मैथ में एक्सपेंशन होता है, और ये देखिए बिल्कुल ऐसे जहां पर जो x की वैल्यू है ये 1 से लेस है, क्या होनी चाहिए 1 से लेस है. यहां पे आप देख सकते हैं डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा b ऑलरेडी लेस होता है डिवाइडेड बाय b, तो ये वैल्यू भी 1 से लेस है. मींस दिस फॉर्म इज रिलेटेड टू दिस फॉर्म एंड वी कैन एक्सपेंड दिस, ओपन दिस बाय दिस पर्टिकुलर फार्मूला. सो हम लोग क्या लिखेंगे a अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ये 1 प्लस x की पावर n, तो 1 क्या हम यहाँ क्या है 1 प्लस nx, n जगह पे हमें -1 तो -1 का मल्टी हो जाएगा, तो ये जगह माइनस ऊपर और नीचे 1 प्लस ये हो गया डेल्टा b अपॉन b. ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस है n, तो n यहाँ पर ये है -1 का मल्टी यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -1 -2 फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है फैक्टोरियल 2. ठीक है, ये सब फैक्टोरियल आपको मैथ में सिखाएगा. फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 into 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है आपका 3 into 2 into 1. ठीक है, तो यहाँ पर आपका फैक्टोरियल 2 है तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी ये आएगा आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये क्या है x स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर, यानी कि ये आपका डेल्टा b अपॉन b का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब डेल्टा b अपॉन एंड सो ऑन. इसी तरीके से ये सीरीज इनफाइनाइट तक होती है, कहां तक होती है इनफाइनाइट. ठीक है, यहां पर ये सीरीज कहां तक रहती है आगे चलती चली जाती है. लेकिन यहां पर आप देखिए ये जो टर्म है ये टर्म बहुत ही क्या है लेस. कैसे लेस है, डेल्टा की ऑलरेडी क्या होता है आपकी लेस क्वांटिटी होती है, उसमें से आप लेस क्वांटिटी एक स्मॉल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बहुत ही स्मॉल
इस टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, और इसके आगे की जो भी टर्म्स होंगे वो सारे और भी ज्यादा क्या होते हैं कि स्मॉल, क्योंकि आगे यहाँ पे स्क्वायर है, फिर क्यूब आएगा, तो और भी ज्यादा स्मॉल होंगे। तो इसके बाद सारे हायर टर्म जितने भी हैं हायर पावर के उनको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, हम लोग क्या लिखेंगे फाइनली, इसको यहाँ पर लिखते हैं a अपॉन b ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a ब्रैकेट 1 प्लस माइनस, देखिए इसको प्लस माइनस या माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा b अपॉन दोनों ही है उसमें से, ये हो गया आपका। इसको सॉल्व कर लेते हैं, a अपॉन b 1 का मल्टी करेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन डेल्टा b अपॉन b का मल्टी करेंगे प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, इसका मल्टी करोगे तो ये आएगा आपका डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसका मल्टी से करेंगे सारे टर्म आ गए। इसमें आप देख सकते हैं ये टर्म भी बहुत ही स्मॉल है, दोनों स्मॉल वैल्यू को मल्टी और डिवाइडेड बाय a b, तो उसको भी आप निगलेक्ट कर देंगे ऑन निगलेक्टिंग दिस टर्म, तो आपका फाइनली बचेगा a b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई। इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, यहां पर ab का मल्टीप्लाई कर देंगे, ab का मल्टी 1 से होगा तो यहां पर आ जाएगा ab, फिर ab का मल्टी इस पूरे टर्म के साथ होगा, ab का मल्टी से करा दिया, अब ab का मल्टी इससे नहीं कराएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई लिख देंगे, प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए यहां पर, प्लस माइनस ab ब्रैकेट में आपका बचेगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन, देख लीजिए यहां पर प्लस माइनस कॉमन ले लिया, ab का मल्टी हो रहा है दोनों टर्म से, तो ab को मल्टीप्लाई में लिख दिया। ये किसके किसके इक्वल था, z के इक्वल को सॉल्व कर रहे थे, और ये सॉरी z प्लस माइनस डेल्टा z, तो z से कंपेयर किया, z की प्लेस पर ये है ab, z इक्वल टू क्या था आपका ab था, तो यानी z आपका किसके इक्वल है, तो डेल्टा z किसके इक्वल है, जो रिमेनिंग टर्म आपका यहां पर बच रहा है, यानी डेल्टा z की वैल्यू आपकी आ गई, और ये क्या है, ये z है, तो इसको आप z लिख सकते हो, z ब्रैकेट में डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, इसको आप z को डिवाइड कर देते हो तो यहां पर होगा डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, दिस इज डेल्टा z अपॉन z डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b, इट मींस for division case there is also the same result where which we have derived for addition case. So addition and for multiplication and division, the result in resulting error in the resulting physical quantity is in terms of relative error, it is not in terms of mean absolute error, okay। तो इसको आप परसेंटेज एरर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास 100 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जाएगा इनटू 100, यहां पर होता है इनटू 100, यहां पर हो जाएगा इनटू 100। अब ये वैल्यू परसेंटेज एरर रखी, तो इसको आप क्या लिख सकते थे, डेल्टा, ये आपका परसेंटेज एरर हो गया पूरा, ये भी परसेंटेज एरर, ये भी परसेंटेज, इसमें भी आप ये कर सकते हो, यानी द sum of percentage error in the physical quantity which are being divided and multiplied is equal to the resulting error in percentage error in resulting physical quantity। तो ये resulting physical quantity percentage error या relative error के टर्म में आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपका आ रहा है। चलिए अब हम लोग जरा एक और देख लेते हैं, now we will discuss this particular relation here and we would find the relation between the errors in this type of particular function। we have seen this type of relation, addition, we have seen subtraction case, we have solved multiplication, we have solved division, now we would solve with powers, okay। now let put z plus minus delta z equal to here a plus minus delta a to the power b, and this term would be coming in numerator
बी अपॉन बी टू द पावर माइनस क्यू। ए और ये आपका इसको एक साथ कर लीजिए, ए टू द पावर बी, ये डिनोमिनेटर में है, बी टू द पावर क्यू। ये आपका एक्सपेंड करिए 1 प्लस एक्स की पावर है। अभी आपको मैंने बाइनोमियल का फॉर्मूला बताया पिछले डिवीजन वाले केस में, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n सो ऑन। तो 1 प्लस एक्स की पावर है ये वैल्यू, तो 1 प्लस nx, n आपका यहाँ पर 1 p है तो p x की जगह ये है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस nx प्लस माइनस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इसका स्क्वायर यानी डेल्टा a अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस n सो ऑन, ऐसे ही ये टर्म होंगे आपके। तो जरा इसमें देखिए, ये जो सेकंड टर्म है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये जो सेकंड पावर का थर्ड टर्म है, इसमें डेल्टा a का अपॉन a का स्क्वायर, और आपको पता है डेल्टा a अपॉन a वैल्यू 1 से लेस होगी और 1 से लेस वैल्यू का स्क्वायर और भी स्मॉलर वैल्यू होगी। इट मींस वी कैन नेग्लेक्ट दिस स्मॉलर टर्म एंड फर्दर टर्म वुड आल्सो बी वेरी स्मॉल बिकॉज़ पावर वुड बी थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो ये सारे टर्म आपके बहुत ही स्मॉल, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। सेम वे यहां पर भी हम लोग करेंगे इस टर्म के साथ, तो यहां पर भी आपका क्या आएगा, यहां पर आपका आएगा, ये आपका आएगा 1 प्लस माइनस nx मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो चेंज कर दिया माइनस प्लस, बट फर्क कोई नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस ये आपका q डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। और बाकी के टर्म हमने क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, a की पावर b, b की पावर q, पहला टर्म ये आपका 1 प्लस माइनस, फिर आपका ये टर्म b डेल्टा a अपॉन a, बाकी के टर्म नेग्लेक्ट कर दिए तो सिर्फ ये बचेगा आपका। उसके बाद आपका सेकंड मल्टीप्लाई में था b वाला, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस माइनस, माइनस प्लस था तो माइनस प्लस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका q डेल्टा b अपॉन b, बाकी के टर्म हम लोगों ने क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर क्या था, z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर b की पावर q, 1 का मल्टी 1 माइनस प्लस q डेल्टा b अपॉन b, इसके बाद इसका मल्टी से करेंगे प्लस माइनस p डेल्टा a अपॉन a, इसका मल्टी करेंगे प्लस माइनस यहाँ पर आएगा ही आएगा, क्योंकि प्लस का माइनस से भी होगा तो प्लस माइनस आएगा, p का q से होगा तो pq डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a, और ये टर्म बहुत ही स्मॉल होगा, डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a भी, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या रहता है, वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। फाइनली हम लोगों के पास आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, ये आपका हो गया a की पावर p b की पावर q 1, यहाँ पर देखिए इन दोनों में प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो आपका बचा क्या ब्रैकेट में आपका q डेल्टा b अपॉन b प्लस p डेल्टा a अपॉन a, ये देखिए q डेल्टा b अपॉन b, p डेल्टा a अपॉन a, इसका अंदर मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू है z के इक्वल है, तो z का मल्टीप्लाई हो जाएगा z प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका z ब्रैकेट में q, इसको आप पहले लिखिए p डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, z प्लस माइनस डेल्टा z, तो देखिए z के प्लेस पर ये है तो डेल्टा z इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा z हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट टाइम में z ब्रैकेट में p डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b, q डेल्टा b अपॉन b। अब यहाँ पर z इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड, तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये रिजल्ट देखिए, सॉरी यहाँ पर p है और यहाँ पर q, तो ये रिजल्ट आपका आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था हमारा z इक्वल टू a टू द पावर b और b टू द पावर q। तो रिजल्टिंग एरर जो हमारी आई है वो भी किसके टर्म में आई है, क्या है, रिलेटिव एरर है और या परसेंटेज एरर के टर्म में कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका रिलेशन बस ये जो
discuss the next topic in the next video lecture. Thank you, students. Good morning, class. Today we have understand the next topic, that is there are three basic kinds of computer: analog computer, digital computer, and hybrid computer. Firstly, we understand which computers are known as analog computers. Analog computers are those computers which process analog data. Analog data means continuous signals which process the continuous signals. The data include light, it measures temperature, pressure, speed, voltage, and depth. Means you see in bikes and in cars there is a speedometer which is the example of continuous signal. And in speedometer, when you move your car, the car moves, the speedometer also works, but when we suddenly brake the car or stop the car, the speedometer speed is not becomes zero, it takes some time. So the measurement of analog is not best. The signals contain continuous and having infinite variety of values. So it gives infinite values at a time, and we use the analog computer for various purpose. We also use analog computer for scientific and engineering application, because the analog computer is firstly developed, so mostly people use the analog computers. And if we measure with the analog computer, so we can measure the temperature, we can measure the speed of a bike, we can measure the speed of a car, we can also measure the temperature and pressure in our labs. So these computers are very important in our life, and these computer measures and compares quantities in a single operation. So this is all about the analog computer. Then we understand the next, digital computer. You all know about digital computer. Digital computer works on discrete signal, means digital signal, and a digital signal have two values, that is 0 and 1. 0 value shows the off state and 1 value shows the on state. You know there is a circuit, and in a circuit when we on our fan, then the value becomes 0, the circuit will complete and the fan move. And when the value becomes 0, it doesn't move. And you know in digital computer we use discrete signals. Discrete signals are those signals which have two values, 0 and 1. They perform arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, mod. So these computers perform many arithmetic operations. So they are best compared than analog computer. They are also faster than analog computer. They store variety of information, because in our digital computer there is a PC, also example of digital computer, and in PC there are two type of memory. The memory is RAM and ROM. The RAM means random access memory, which stores the information when we execute our process the data, and after that it stores in secondary memory like magnetic memory, like hard disk. So we can store our data in our digital computer. It can work on both information, numeric and non-numeric information. Non-numeric information just like characters, alphabets, digits, symbols also. Digital computer stores information and digital computer counts, whereas analog measures. It means digital computer can
we can use data in bits, bytes, megabytes, gigabytes, terabytes. So we can store a lot of data in our digital computer. The third type of computer is hybrid computer. Hybrid computer means it is the combination of digital computer and analog computer. So hybrid computers are more useful than digital computer and analog computer because they can process both signals, discrete signals as well as continuous signals. Continuous signals are the analog signals like our voice. Voice is a continuous signal. If we use distance or we vary from one place to another place, the continuous signal becomes weak. So we use amplifiers and repeaters in the case of continuous signals. But in the case of discrete signals, the value is always 0 and 1. There is no value between 0 and 1. So it completes one cycle. In hybrid computer, we use hybrid computer in petrol pump and in ICU. In ICU, it measures the blood pressure of a patient and temperature of a patient and digitize the blood pressure and temperature units into our digital computer. And in petrol pumps, it checks the density of petrol and the quantity of petrol with the help of analog system. So hybrid computers are used in variety of applications and they are used in scientific applications and in radar systems. So this is all about your computers, analog computers and digital computers and hybrid computers. So we revise analog computer. Analog computer, the process, it processes the analog data, means it always work with the continuous signals and data include temperature, pressure, speed and voltage and depth, means it always measures the physical quantities like temperature, pressure, speed, voltage and depth. It works on the continuous signals and continuous signal having the variety of values, and the analog computer used for scientific and engineering applications. It also used in lab and it measures and compares the quantities in single operation. If we want to know about digital computers, it work on discrete signal. They have only two values, 0 and 1. They work on numeric values and non-numeric values. They perform arithmetical operations like addition, subtraction, multiplication and division, and they are faster than analog computer. They stores the data and information in our computer like PC, like microcomputer, mini computer, mainframe computer and supercomputer. These are the kinds of digital computer and they stores the information in secondary memory, and digital computer counts whereas analog computer measures the data. In hybrid computer, it is the combination of digital computer and analog computer. So the advantage of hybrid computer, it works like digital computer and it also works like analog computer. And we use both type of signals in hybrid computer, means it can process discrete and continuous signals. They are used in petrol pumps, ICU, where we use its both properties like analog property and digital property, and these computers are used in scientific and radar system. So this is all about this class. In next term, we will study the new topic, that is types of computer, in which we can understand microcomputer, mini computer, mainframe computer and supercomputer.